back to study with me again, and yeah, I think I'll be uploading study with no commitments, no commitments. I'm not someone who can handle it, but मैं कुछ नहीं कहूँगी यार, जो भी मैं कहती हूँ कभी होता नहीं है, so no commitments, because I say something, I do something, that's not something, like I don't give promises. But yeah, we are studying today. आज हम बस ये मैं आज का मुझे पता है, and in fact I also believe in, I don't believe also, चल छोड़ यार क्या बकबक कर रही हूँ मैं. तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन और द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, विच इज एज एन ICSE थ्योरी लगा रखा होगा मैंने, कहीं मुझे पता है. तो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग. जस्ट टू स्टडी विद मी, यू गाइस वांट टू स्टडी, ओपन योर बुक्स, पुट माय आवाज़ कम, मेरे पास मैं चिल्ला चिल्ला के मैं पढ़ सकती हूँ, मुझे नहीं पता, तो प्लीज़ वॉल्यूम कम कर लेना एंड स्टडी विद मी, एंड दैट इज इट. सो लेट्स बिगिन. बाय द वे, one more thing, these videos are generally for someone who just wants some company to study, like me. I need your company to study. So yeah, let's begin. भाई 1 मिनट हो गया, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है. क्या कहाँ से पढ़ूँ मैं? Oh God, it's so much. Okay guys, हाँ मैं सोच रही हूँ मैं पहला ना रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ूंगी, फिर मैं एंडोक्राइन पढ़ूंगी, बिकॉज मैं लिटरली मैं पता कैसा होता है कि प्लांट फिजियोलॉजी में पहला वाला है रिप्रोडक्शन के लिए, सर्कुलेटरी है, किडनी है, नर्वस है, ये ई है मतलब ईयर और आई है, उसके बाद ये वाला है विच इज आर एंडोक्राइन है, उसके बाद रिप्रोडक्शन ह्यूमन से. बट मैं कैसे आप रेडिट दो, बट चलो यार पहले एंडोक्राइन कर लेते बेटर है. सो विल स्टार्ट डायरेक्टली विद द एडर्नल मेडुला एंड एडर्नल कॉर्टेक्स. पहले बात हम एडर्नल के बारे में पढ़ेंगे, एंड आई जस्ट नीड वन ऐसे ना कुछ ऐसे लाइन मारने के लिए, कुछ नहीं, कुछ करना वरना है नहीं, वो ऐसा वो थोड़ा अच्छा लगता है. मुझे एक पेपर चाहिए, फिर इसको लेट मी जस्ट गो एंड गेट इट. 8 के क्वेश्चन पेपर मिल चुके हैं, तो हम इसी को यूज करेंगे. इसकी स्कूल इतने कंजूस है यार, बट या गाइस नेवर माइंड, लेट्स गेट बैक. So what first for adrenal medulla? Adrenal medulla secretes adrenal line, which is also called as noradrenal line, and it is also called as epiphyrein. ठीक है, adrenal is a hormone which prepares the body to meet any emergency situation, for fight, to face danger or flight, to run away from it. Extra energy and strength is provided to the body in that situation of emotional stress. When excited or angry, our adrenals produce a lot of adrenal line. The gland itself is stimulated by the nerve ending of autonomic nervous system. ठीक है, इतना भाई पता तुझे, समझ आ गया? चल बता क्या समझ आया. देख, पहले बात ये समझ आया कि एक है भाई जो एडर्नल मेडुला नाम का एक है, जो एडर्नल, जब वो एडर्नल कहाँ प्रेजेंट होता है, वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, इतना पता है. ठीक है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स का वो बाहर वाला है, जो मेडुला के, जो कि एडर्नल के ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला आउटर वाला कवरिंग है, उसको हम बोलते हैं एडर्नल पेरिफेरल, ऐसा कुछ है. अंदर वाला एडर्नल मेडुला है. ठीक है भाई, इतना पता तुझे. चलो अभी हम अंदर वाले की बात करते हैं. तो वो कौन सा हार्मोन, वो क्या सिक्रेट करता है? वो सिक्रेट करता है एपिफेराइन, नोराड्रेनल लाइन, एंड इट इज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एड्रेनल लाइन. एक्चुअली एड्रेनल इज ऑल्सो कॉल्ड एपिफेराइन एंड नोराड्रेनल लाइन. ठीक है, ये तो समझ आ गया. ठीक है, एंड और ये क्या करता है? इट गिव्स अ डायरेक्ट एक्शन ऑफ अ फ्लाइट, मतलब भाग जाओ वहां से, या फिर फाइट करो उससे. दैट इज व्हाट इट गिव्स. ठीक है, एंड व्हेन एक्साइटेड, एंग्री, हम एक्साइटेड होते हैं, एंग्री होते हैं, रोते हैं, धोते हैं, कुछ भी. ठीक है, दैट्स ऑल. व्हाट इज दिस होते हैं ना. The gland itself is situated by the nerve ending of the autonomic nervous system. It is situated of the autonomic nervous system. ठीक है, इतना बताया मैं कि autonomic nervous system, the gland itself is stimulated by the nerve ending of the autonomic nervous system. Okay. The gland itself is at the end of the autonomic nervous system or nervous system, autonomic nervous system. Functions of adrenal line: the emergency hormone. It increases heartbeat accompanied by the increase in blood pressure. It increases blood supply to the muscles while decreasing it to skin and visceral organs. More glucose is released into the blood by the liver, like putting more fuel into the engine. The final dash to win a race is under the influence of adrenal line. Adrenal cortex secretes many hormones, but the best known hormone is cortisol. तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में, जो कि बाहर होता है. ठीक है, कॉर्टेक्स है ना, एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रेनल पेरिफेरल होता है. ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ते हैं हम. ठीक है, अब वो क्या करता है? वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसका हम बोलते हैं कॉर्टिसोन, विच इज ऑल्सो, विच क्या करता है? ये इन्फ्लेमेशन को, सप्रेशन ऑफ द इन्फ्लेमेशन करता है. क्या करता है? सप्रेशन ऑफ द इन्फ्लेमेशन करता है. भाई 3 बजने वाले, जल्दी करना होगा. इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करता है. ठीक है, अभी इसमें
एड्रेनल कॉर्टेक्स में मतलब जो क्या सीक्रेट करता है, कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन करता है, ठीक है। इसमें भी अगर 3 प्रकार के हैं, पहला एक मिनरल कॉर्टिसोल, एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉल, एक है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, कॉर्टिकॉइड्स। अब पहले हम पढ़ते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। अब ये क्या करता है, रेगुलेट द मिनरल मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है, रेगुलेट्स द मिनरल मेटाबॉलिज्म। रेगुलेट्स व्हाट, रेगुलेट्स मिनरल मेटाबॉलिज्म। क्या करता है, रेगुलेट्स मिनरल मेटाबॉलिज्म फॉर K प्लस एंड Na प्लस, ठीक है, याद रख लेना यार, मतलब सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। K प्लस रेगुलेट्स मिनरल मेटाबॉलिज्म, स्पेशली Na प्लस K प्लस रेगुलेट्स मिनरल मेटाबॉलिज्म, रेगुलेट्स मिनरल मेटाबॉलिज्म, रेगुलेट्स मिनरल मेटाबॉलिज्म। क्या है भाई, मिनरल कॉइड्स के क्या है काम, रेगुलेट्स मिनरल मेटाबॉलिज्म, रेगुलेट्स मिनरल मेटाबॉलिज्म, रेगुलेट्स मिनरल मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट मेटाबॉलिज्म। इन जनरल कॉर्टिकल hormones increase blood sugar concentration, influence fat and protein metabolism, regulate salt and water balance in the body, adapt the body to stress such as extreme heat or cold, burns, etc. And etc. Okay. Next, sex corticoids. Sex corticoids, certain cortical hormone behave like sex hormone. They are both male as well as female hormone in both sexes, and overgrowth of cortex in young children leads to a premature sexual maturity. ठीक है, if there is an overgrowth of an adrenal cortex in in women, she develops certain main characteristics such as she has beard, mustache, deep male voice. This condition is called as adrenal virilism, ठीक है। Next, if the overgrowth occurs in mature men, they may develop similar characteristics such as the enlargement of breast. इसको क्या कहते हैं, दिखाने चलो, एक याद करने की चीज कम होगी। Oh my god, my Hindi sucks. Never mind. हाइपोसिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन मतलब कम हो रहा है, हाइपरसिक्रेशन मतलब ज्यादा हो रहा है, इतना याद रख लो। हाइपोसिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स कॉजेज एडिसन्स डिसीज। सिम्टम्स आर लॉस ऑफ एनर्जी, स्किन पिगमेंटेशन, लॉस ऑफ वेट, नोजिया, हाइपोग्लाइसेमिज्म, लो ब्लड शुगर, सेंसिटिविटी टू कोल्ड एंड पेन, इंक्रीज susceptibility to infection, etc. Hypersecretion of cortisol from adrenal cortex causes Cushing syndrome. Syndromes are obesity, hyperglycemia, high blood pressure, osteoporosis, weakness, salt remain retention, ये सब होता है, ठीक है, ये सब होता है हाइपरसिक्रेशन में और हाइपोसिक्रेशन में, ठीक है। पैनक्रियाज क्या है, पैनक्रियाज इज बोथ अ डक्ट एज वेल एज अ डक्टलेस ग्लैंड। एज अ डक्ट ग्लैंड इट सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक juice, it is poured into the duodenum for the digestion. As a ductless gland it has special groups of hormone secreting cells called as islets of Langerhans which are scattered in an entire ग्लैंड। द आइलेट्स प्रोड्यूस 3 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एक वाला नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना है भाई, 3 करता है वो याद रख लेना बस। पहला है ग्लूकोज, इंसुलिन और एक सोमैटोस्टेन है जो मुझे नहीं है, वो नहीं है सिलेबस में, मैं वो नहीं करने वाली, मेरे पास टाइम नहीं है भाई। इंसुलिन और क्या है भाई, और एक और है ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। अभी इंसुलिन के बारे में पढ़ते, देखो इंसुलिन सीक्रेटेड बाय बेटा सेल्स, इसको हम इंसुलिन को हम ऑल्सो बोलते हैं एटा मेटा बेटा कह रही है बेटा, हम बेटा अल्फा डेल्टा, ठीक है। अभी हम इंसुलिन को क्या बोलते हैं, इंसुलिन को क्या बोलते हैं हम, बेटा। इंसुलिन को हम क्या बोलते हैं, बेटा। इंसुलिन को हम क्या बोलते हैं, बेटा। इंसुलिन इज कॉल्ड एज बेटा, इंसुलिन इज कॉल्ड एज बेटा, इंसुलिन इज कॉल्ड एज बेटा, इंसुलिन इज कॉल्ड एज बेटा। Cells check rise of sugar level in blood. This it does in 2 principal ways. It promotes glucose utilization by the body cells, thereby reducing the blood sugar level. It stimulates deposition of extra glucose of the blood as glycogen in the liver and muscles. Under secretion of insulin, insufficient secretion of insulin causes diabetes. More correctly diabetes mellitus and hypoglycemia. Hypoglycemia कहते हैं इसको, hyperglycemia, hyperglycemia, or it is called as diabetes mellitus. The word mellitus means honey, referring to the passage of sugar, glucose in urine. A diabetic person has high concentration of sugar in blood. हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपर मीन्स एक्सेस, ग्लाइसेम मीन्स शुगर एंड इमिया मीन्स ब्लड, तो हाइपरग्लाइसेमिया एंड व्हाट डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, एक्सर्ट अ ग्रेट डील ऑफ यूरिन लोकेटेड विद शुगर, फील्स थर्स्टी, बिकम ऑफ लॉस ऑफ वाटर थ्रू टू मच ऑफ यूरिनेशन, लॉस ऑफ वेट एंड बिकम्स वीकर इन सर्टेन कॉजेज, द पर्सन लूजेस आई साइट और इवन विजन। भाई मेरे साथ होता है क्या यार, ये कसम सारी मेरा आई साइट एज गॉड, मैं कुछ देख नहीं पाती हूँ, देखिए थोड़े बहुत बड़े बड़े अक्षर है और मैं ऐसे इतना पास ना तो देख सकता है, बट और एल्स इफ someone is standing 10 meter far away from me, for 5 meter far away, 5 meter far away from me, I cannot see, I will not identify. इतना गंदा मेरा ये रखा है, तो आई विल नॉट वेयर चश्मा क्योंकि अकड़ है मेरी,
नेवर माइंड. ओवर सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन. ओवर सीक्रेशन में क्या आ जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया. अच्छा मैंने गलत कुछ तो नहीं बोला ना? हाइपोग्लाइसीमिया कुछ तो गलत बोला है मैंने. नहीं यार सही बोला है. हाँ नहीं यार गलत बोला है क्या? अंडर सीक्रेशन को हाइपर सीक्रेशन बोलते हैं क्या? नहीं यार सही है, सही है, सही सही बोला, सही बोला, सही बोला, सही बोला, सही बोला, सही बोला है बहन, सही बोला है. ठीक है ऐसे बोला. शुगर लेवल हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर मतलब कम. हाँ बराबर है, बराबर बराबर है. शुगर लेवल इज लोअर, ब्रेन में एंटर अ स्टेट ऑफ कोमा इफ द लेवल बिकम्स टू लो इवन फॉर a few minutes. A smaller thing may happen to a diabetic patient if an overdose of insulin is given. The patient may become unconscious. This is called insulin shock or hypoglycemia, and a prompt bite of sweet biscuits or sugar can be is helpful. जो मतलब होता है ना एक मूवी है पता है, समंता समंता है ना, समंता वो ऊंटावा. आई एम श्योर आई एम समंता ओनली भाई. आई एम सीइंग समंता. आई एम सॉरी समंता, मैम बुलाओगे मैं? ठीक है. देयर इज एन एक्टर कॉल्ड एज समंता. शी इज डिवोर्स. सो हम मैं उस नाम से विच विल नॉट टेक हर हस्बैंड्स नेम, बट हाँ तो वो एक मूवी बनाया विद अल्लू अर्जुन. तो दैट शी ईट्स कैंडी, रिमेंबर दैट वन? इट्स देयर, यू हैव टू वॉच इट. इसमें सुधी उपेंद्र एंड ये सब ऐसे बिल के इन्होंने बनाया. एंड आई एम टेकिंग देयर नेम. मैं छोटी बच्ची, मुझे पता है भाई, पता है. मैम सर ठीक है, लगा लो अपना. आप सीन भाई कितने लोग ऐसे ऑफेंड हो जाते हैं, मैंने देखा है, especially in my class at least. I hope children are not like my class, and most of them I don't think most of you guys even know because you are so studious. मेरी तरफ से नहीं हो गया जो इतने ज़्यादा मूवीज देखते हैं, because I am huge pablo of South Indian movies, but never mind. Let's get back. Glucagon is secreted from alpha cells. It stimulates the breakdown of glycogen in the liver to glucose, that it raises sugar level in the blood. ठीक है, इतना हो गया भाई. हार्मोन्स ऑफ एडिक्ट्स ऑफ इंसुलिन ग्लूकेगॉन टमाटो. जो सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे भाई, सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज बोर्ड्स आने वाले 2 महीने में, नहीं पढ़ेंगे जो सिलेबस में नहीं है. इंसुलिन क्या है? प्रमोट शुगर ग्लूकोज अपटेक बाय द बॉडी. ठीक है. cells stimulate deposition of extra glucose in the liver and the muscles. Deficiency causes diabetes mellitus. Sugar diabetes excess causes nerve cell starvation and brain coma. Glucagon stimulate liver to control glycogen into glucose, inhibits secretion of insulin and glucagon. ठीक है भाई, हो गया. हसीन दिल रुबा न जान कॉपीराइट never seen it. Thyroid. A thyroid is a billowed butterfly shaped structure. ठीक है, billowed butterfly shaped structure situated in front of the neck above the larynx. The two lobes are joined by a narrow isthmus interconnection. It secretes two hormones, thyroxine and calcitonin जो syllabus नहीं है, नहीं पढ़ना. Thyroxine regulates the basal metabolism, the rate of cellular oxidation resulting in the heat, production at rest, and increase in the secretion increases metabolism, and a decrease in secretion lowers it. It also influences the general growth of the body, ossification of the bones, body temperature, mental development, etc. Under secretion, hypothyroidism, over secretion, hyperthyroidism. हाइपोथायरॉइडिज्म मतलब अंडर सिक्रेशन. ठीक है, अंडर सिक्रेशन हो रहा है भाई, थायराइड नहीं आ रहा है, थायराइड नहीं आ रहा है कह रही मैं. जब हाँ थायरॉक्सिन नहीं आ रहा है बॉडी में तो क्या होता है? ठीक है, बिकॉज थायराइड इज जेन्युइनली, इट इज वेरी 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 कॉमन. मैंने देखा एटलीस्ट, इट इज सो कॉमन, वेरी वेरी कॉमन. जहाँ पे मैंने देखा, ठीक है, मैंने देखा है, बहुत कॉमन है. इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन में लीड टू 3 कंडीशंस: सिंपल गाइटर, क्रिटिनिज्म एंड माइक्सोडेनम. ठीक है, पहला क्या है? सिंपल गोइटर. ठीक है, क्रिटिनिज्म, आई डोंट नो व्हाट इज क्रिटिनिज्म. मुझे सिर्फ गाइटर पता है, गाइटर, वो भी नॉट इवन गोइटर. ठीक है, माइक्सोडेनम. Simple goiter is enlargement of a thyroid and is visible in the neck. This is due to the insufficient quantity of iodine in the food. This condition is common in the people living in the hilly regions where iodine is deficient in soil and hence in the food grown there. Thyroid deficiencies are common in many parts of India. Use of iodized salt containing iodine in food is recommended because iodine is active ingredient in the production of thyroxine. ठीक है,
Cretinism is the condition in which the growth of a child shows dwarfism and mental retardation. This is due to the defective development or the early atrophic degeneration of the thyroid. तो यहाँ पे क्या होता है, ये बच्चा जो है ना वो डार्फिनिज्म शो करता है. इन द सेंस आपको पता होगा, आपको नहीं पता भी हो सकता है यार, बट मोस्टली प्रेग्नेंट जो रहती है लाइक 3 months 2 months आई गेस, हाँ, तो उनको या फिर जस्ट 1 month, तो उनको पता है अगर डॉक्टर ऑलवेज गिव द थायराइड वाला टैबलेट, तो सर मुझे लगता है कि शायद बच्चे को कहाँ क्रिटिनिज्म ना हो जाए. आई एम नॉट श्योर, अगेन आई माइट बी रॉन्ग, बट हाउ मच आई नो एटलीस्ट ऐसा हो सकता है. आई एम नॉट श्योर अगेन. ना माइक्रोडेन, बिकॉज मैंने देखा यार, बिकॉज आई हैव सीन सो मैनी. अब कैसे देखा है, छोड़ो यार. Myxodenum is a condition that affects an adult. If his thyroid does not function properly, in this condition, the person becomes sluggish with swelling of the face and hands. क्या होता है sluggish, swelling, मोटे मोटे हो जाते हैं. ठीक है. ओवर सिक्रेशन ऑफ लाइक हाइपरथायरॉइडिज्म, एक्सेस ऑफ थायरॉक्सिन सिक्रेशन में कॉज अ काइंड ऑफ गॉइटर कॉल्ड एज एक्स. ये भी अभी एक्सेस हुआ, अभी तक कम हुआ तभी गॉइटर होगा, अब ज्यादा हुआ तब भी गॉइटर होगा. अभी वो वाला कैसा गॉइटर देखो, एक्सोफैटाल्मिक गॉइटर, आउटवर्ड ऑप्थोमलस आई, आई जो ना ऐसे बाहर आ जाते हैं, ऐसे बाहर आ जाते हैं. होता है भाई, देखा है मैंने, 2 महीने कभी नहीं देखा है, नाटकी देखो मेरी. अ पर्सन हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर सिक्रेशन शोज प्रोस्ट्रक्शन ऑफ आई. बुक में देखना, पढ़ रहा है ना तू, तो बुक में देख के पढ़. If you're using Selena, you might be seeing this lady. मैं लिटरली मैं रात को देख के डर गई थी पढ़ते वक्त. So I never read this chapter in night. If I'm reading, I'm like ऐसा लगता है कि मैं कॉन्जरिंग देख रही हूँ. कॉन्जरिंग में पता है एक थी, देयर इज अ कैरेक्टर इन कॉन्जरिंग, शी लुक्स एक्जेक्टली लाइक हर. आई एम नॉट अगेन मेकिंग दैट, क्या कहते हैं वो, कुछ गंदा, नो गाइस, नॉट लाइक दैट, बट थोड़ा डर लगता है यार. मतलब आई एम नॉट सेइंग समवन हु हैज अ हाइपोथायरॉइडिज्म, मुझे उनको देख के डर लगेगा, बट दिस पिक्चर इज मेकिंग मी स्कैरिंग. यू गेटिंग इट? सो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग लाइक, ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है, बट स्टिल दिस वन इट्स नॉट फॉर समवन एल्स हु इज हैविंग हाइपोथायरॉइडिज्म. आप लोग सुंदर हो, दिस गर्ल इज नॉट सुंदर, बट सॉरी शी इज सुंदर बट शी इज स्कैरी आउट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. क्या यार मैं भी, चलो छोड़ो. Formation of goiter in the neck, a marked increase in metabolic rate, rapid rate heartbeat and shortness of breath. ये सब conditions होते हैं hypothyroidism, undersecretion, hyperthyroidism, oversecretion. ठीक है. Next हम पढ़ेंगे puberty. guys, puberty you guys might be knowing. भाई puberty, भाई तुम सबकी puberty तो हम सबकी hit हो चुकी है, I guess almost. We all are like sweet 16. तो हमारा ऐसा नहीं है सर, sweet 15 यार. 15 है यार, 15 है सब लोग. 10th में है, 15 है, 15 है, 15. But next year we are 16. क्या कर रही हूँ मैं, पढ़ना है मुझे. Pituitary gland. The pituitary gland is a small production above a pea-shaped which hangs on the base of the midbrain. अभी मैं जो मिड वाला पढ़ना है. Midbrain below the hypothalamus. It is popularly called the master gland because it seems to control particularly all other endocrine glands. Pituitary gland has 2 distinct lobes, an interior and posterior. एक सेकेंड, डर लगता है मुझे अपने खुद के घर के अंदर भी, मुझे डर लगता है. Never mind, not from भूत प्रेत आत्मा and all, by the way. I do believe in that also, but still भूत प्रेत आत्मा से भी ज्यादा मुझे एक चीज का डर लगता है. Girls will understand. Never mind. क्या नाटकी करती हूँ यार मैं. नहीं गाइस ऐसा नहीं है, बट हाँ डर तो लगता है यार ना. खबरें आती है हर दिन, और आई एम समवन हु डोंट सी न्यूज़. अगर आपको ऐसा लगता है तो नो गाइस, आई सी न्यूज़ एवरी डे एंड आई डोंट रीड न्यूज़पेपर बट आई सी न्यूज़ एंड आई डोंट. नेवर माइंड, लेट्स गेट बैक. The pituitary gland is a small production about the size of a pea seed, which hangs from the base of the midbrain below the hypothalamus. It is popularly called the master gland because it seems to control physical, particularly all other glands. Pituitary gland has 2 distinct lobes, an anterior pituitary and posterior. Anterior pituitary and posterior pituitary. Anterior pituitary जो है पीछे वाला, ऐसे posterior मतलब आगे वाला, इतना याद रख लेना. Entire pituitary gland weighs about 1.5 gram. The
front part of the posterior pituitary gland is different from the rest of the lobe and is called the intermediate lobe. The intermediate lobe is almost absent in humans but much larger and more functional in some lower animals. A hormone from anterior pituitary. Anterior मतलब अंदर वाला नहीं, ऐसे यार ये वाला. Let's assume भाई ये pituitary है तो ये ऐसे है तो ये anterior होगा, ये ठीक है. Some important hormones produced by anterior pituitary gland. Anterior मतलब वो वाला anterior pituitary gland of a pituitary gland are as follows. Growth hormone GH. Growth hormone is essential for normal growth. It is also called the somatotropism. Growth hormone is essential. The deficiency of GH means growth hormone childhood result dwarfism. मतलब वही dwarfism is nothing else but कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है तो उनको हम dwarfism कहते हैं, ठीक है. And the oversecretion in the child results to gigantism. जो I am a patient suffering from gigantism, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, अच्छी खासी हाइट है मेरी but not so much also. But yeah, I really wanted. But you know, people from see how it is. You know, people who are dwarf, जिनके अंदर GH हार्मोन कम है, उनको लगता है कि मुझे गिनेटिज्म हो, और जिनके पास डार्फिनिज्म है उनको गिनेटिज्म चाहिए, और जिनके पास गिनेटिज्म है उनको ड्वार्फिज्म चाहिए. डार्फिज्म मतलब obviously, but still we never value, we never respect what we have. That's very bad thing obviously for sure. Example, my own self. I want dwarfism, I want gigantism, I want both the mixtures क्योंकि मेरे अच्छा खासा हाइट हो जाए, ज़्यादा लंबा भी नहीं, ज़्यादा गिड्डा भी नहीं, अच्छा खासा हाइट. दो आई एम नॉट दैट अच्छा खासा हाइट वाली. आई हैव गिगेंटिनिज्म, अच्छी खासी लंबी हूँ, ठीक है. आई एम 7 फुट 6 इंच, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर 7 फुट 6 इंच. If the oversecretion of the growth hormone suddenly occurs in an adult, there is an excessive growth of bones in face, particularly the jaws and in the hands. And here this develops a large nose, thick lips. This condition is called as acromegaly. ऐसा कुछ, ठीक है. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वही रख लेना. TSH क्या होता है ये सब याद रख लेना है बिकॉज आ सकता है ब्रदर्स, इवन माय डियर सिस्टर्स आ सकता है. GH क्या है, ठीक है. TSH जो कि activates thyroid secretes to secrete thyroxine. Godan stimulating gonadotrophic hormones regulates the activities of testes and ovary. Adrenotrophic hormone ACTH. बता रही हूँ, कसम से बता रही हूँ. ACTH, ठीक है. Adrenocorticotropic hormone regulates the activity of adrenal cortex, ठीक है. डन गाइस, हो गया हमारा डन. चलो अभी हम हार्मोन्स फ्रॉम द पोस्टीरियर. हमने एंटीरियर पढ़ लिया. पोस्टीरियर भी क्या होता है, पोस्टीरियर मतलब आगे वाला भी पता है, ठीक. So the posterior lobe of a pituitary gland, there is these two hormones called as ADH, which is antidiuretic hormone, also called as vasopressin. ADH, ठीक है. Constrict the blood vessels which rises the blood pressure. It also acts on the kidney, increasing reabsorption of water from the kidney troubles. Deficiency of ADH causes diabetes insipidus, water diabetes, in which the urination is frequent and copious, resulting in the loss of water from the body and the person becomes thirsty. Oxytocin stimulates vigorous construction of the uterus in a pregnant woman, leading to the birth of the baby. This also stimulates milk ejection. Control of hormone secretion feedback mechanism. The body has a mechanism to maintain a normal state. Whenever there is a change in the state, there are messages through the body system of the message increase if there is a fall below the normal, or to the decrease if there is a rise above the normal. This kind of ordering for the opposite is negative feedback. To restore the normal state, most feedback mechanism in our body are negative types, but कुछ ही है जो अच्छा है, मतलब पॉजिटिव मतलब बहुत ही कम ही है,
एग्जाम्पल मुझे पॉजिटिव ऐसा कुछ लगता है तो वो सिर्फ एक ही है, दैट इज ऑक्सीटॉक्सिन, और यहाँ पे दिखा रखा भी ऑक्सीटॉक्सिन ही है. एंड वी हैव एवरीथिंग इन दिस चाटी वाली चीज़ है, ठीक है. एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. हियर वी आर डन विद द चैप्टर. और अच्छा है भाई चैप्टर, नाइस नाइस. हसीना दिलरुबा न जाने जाने मन. अभी यार मुझे जो फाइंडिंग हर वाला जो गाना है, पता आपने सुना होगा, जो इतना 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 अच्छा लगा बट नेवर माइंड. लेट्स सी क्या करूँ मैं यार, मुझे क्या करूँ अभी ऑब्वियसली मुझे पता है मुझे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है. मैं सोच रही थी न जाने जाने मन हसीन ला 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 ला. Let's get back. Actually, the main reason why I'm doing 2 chapter पता मुझे पता था कि ये चैप्टर 50 के 25 minutes 25 को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता. So I don't know what to say. So that is the reason 25 minutes. I know it's gonna get over, so that is the reason I thought that we're gonna put one more, so that ये जो है ना नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन वाला, ये थोड़ा थोड़ा सा बड़ा है यार, तो ये हम कर लेंगे कर ले करना हिंदी. So we can do with this, little pop up. So let's do that. Are we guys gonna have a break? No, but abhi I think I'll be offing this now because never mind. Let's start the chapter. The organs of the reproductive system are divided into primary and secondary parts. The primary parts include the godas. वही है जो हमने पढ़ा है पिछले वाले चैप्टर में. godas क्या होता है पढ़ा है हमने. Testes in males and ovaries in females, which produces sex cells or the gametes, the sperm and eggs. Next, the reproductive parts include all those structures, ducts and glands which help in the transfer and moving of two kinds of sex cells related to fertilization and growth and the development of the egg up to the birth of the baby. So according to the criteria, would you नाम झाली सब नहीं पढ़ना. सबमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें टेस्टिस होता है जो 1 पेयर होता है. 1 पेयर इन द सेंस 2 1 पेयर याद रख लेना भाई. मैं क्रोमोसोम वाले चैप्टर में भी ये गलत करके आ रही हूँ, ठीक है. To produce sperm डॉक्टर वास्ट डिफरेंस फ्रॉम ईच टेस्टिस टू कैरी द स्पर्म. एक्सवेरी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल होता है. ये भाई याद रखना. सेमिनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट होता है, बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, ठीक है. पेनिस होता है, यूरेथ्रा होता है, ठीक है. फॉर दिस इज फॉर व्हाट, फॉर ट्रांसफर फॉर्म द जाना. This is urethra, which is contained inside the penis, conveys the sperm received from the sperm ducts. Location: the two testicles, popularly called as testicles, are old organs which are contained in a thin-walled sac of skin called scrotum or scrotal sacs. In the embryonic stage, the testicles are contained within the abdomen. They descend into the scrotum shortly before the birth. An abdominal contraction results when they do not descend, and it leads to territory incapable to produce sperms. A slightly higher temperature inside the body does not permit the maturation of the sperms, but in normal condition, being in a separate sac sustained from the body, the testes escape to the much body heat. Sperms produced in the testes at a temperature of 2 to 3 degrees lower than that of the body. This temperature is regulated in a strange manner through the movements of a scrotum wall. When it is too hot, the skin of the scrotum loosens so that the testes hang away from the body. When it is too cold, the skin contracts in a flooded manner and draws the testes closer to the body for the warmth. That's all. Now let's study the structure of the testes. क्या गा रही है मतलब. प्लीज गाइस, प्लीज डोंट वॉच शॉर्ट्स. पागल हो चुकी मैं शॉर्ट्स देख के. Each testis is annexed in a capsule which is internally partitioned into around 250 lobule segments. Each lobule contains seminiferous tubules which are sperms are produced inside this. Okay, ठीक है. ये the process of जहाँ पे sperms बनाते हैं उसको spermatogenesis कहते हैं. ना interstitial cells जो क्या होते हैं, ये ऐसे होता है, ठीक है. इंटरस्टिशियल सेल्स आप राइट हमें राइट हाँ इंटरस्टिशियल सेल्स वही होते हैं विच आर पैकिंग बिटवीन द कॉइल्स एंड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. द इंटरस्टिशियल सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज लिलिड सेल्स. प्रोड्यूस द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर मेल. It is released in both male and female pattern. So the sperm producing cells of the seminiferous tubule keep multiplying and produce sperms. The mature sperms pass into the small network of the tubules. From the network arises 12 to 14 ducts. Efferent duct which join, efferent duct ये है join a small tubular knot, again knot जैसे है, that is
नॉट हाँ एफरेंट है, ये एफरेंट, यार ये एपिडिडाइमस है यार, पागल है लड़की, एफरेंट कहाँ है फिर, अच्छा सॉरी ये एफरेंट है और फिर ये होता है हमारा एपिडिडाइमस, ठीक है, आई एम सो सॉरी गाइस. हाँ, fitting like a cap, upper pole of the testis. The epididymis is contained by the side of the testis up to its back, where a distant sperm past different sizes. The epididymis internally contains a single coiled tube, actually 6 meter long, uh, which transfers from the upper part of the testis to its back, and then it continues into the sperm duct. The epididymis stores the sperm for some days, during which they mature and they become motile, capable of moving. Now next, sperm ducts. The sperm duct vas deferens, so sperm duct is also called as vas deferens, याद रख लेना. Each testis travels into the upper abdomen, passing through the inguinal canal. The inguinal canal originally is the one which allows the descent of testes along with the ducts, blood vessels, nerves, etc. Sometimes due to pressure in the abdomen, the intestine bulges into the scrotum through the inguinal canal and causes the most common type of hernia. The two sperm ducts loop over the uterus of their sides, come together and join the medial duct of urethra at the back of the urinary bladder. ठीक है भाई. Now let's study accessory glands. मैं भी भूल जाते हैं accessory glands, दिमाग में उड़ ही जा हो जाता है. Now man guys, we can study it. जो मेरे एकदम प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होते जा रही है बहुत सारी, बस 30 मिनट हो गया, मेरी क्षमता गई पढ़ने की, बट नेवर माइंड, लेट्स गेट. Seminal vesicle, a pair of lobulated glands located between the posterior surface of the urinary bladder and the rectum. A duct from each seminal vesicle joins the corresponding sperm duct just before it enters the urethra, produces secretion which serves as a medium for the transportation of the sperms. The mixture of this fluid and the sperms produce a milky fluid, the semen and sperms. In the sperm duct, the sperms are sluggish, but by the addition of this secretion, they become active. The prostate gland, a bilobed structure which surrounds the urethra close to its origin from the bladder. It pours an alkaline secretion into the semen. As it passes through the urethra, it neutralizes acids in human vagina. Bulbourethral gland or Copper's gland also. ये और वाला याद रख लेना, क्या पता नहीं कहाँ आ जाए, मतलब यहाँ पे हमने पढ़ा बुल्बोयूरेथ्रल कॉपर्स ग्लैंड, पता नहीं है यार भाई बुल्बोयूरेथ्रल ही कॉपर्स ग्लैंड है, ठीक है. सो दीज आर two small ovid glands which open into the urethra just before it enters the penis. It serves as a lubricant. A penis lies in front of the scrotum, cylindrical in shape, serves the passage of both semen and urine. It is highly vascular organ having erectile tissues and vascular spaces. Under the influence of sexual stimulation, blood flows in a large amount into the penis and enters into the vascular spaces and sinuses, which makes it rigid and erect. Expansion of these spaces compress the veins and thus blood cannot drain out. Such condition of penis is called as erection. Semen is mixture of sperms and secretion from the seminal vesicle prostate corpus gland. It is a milk fluid in an average amount is 2 to 3 ml in a single ejection and contains 200 million to 400 million fluids. Okay, just done with this one. Now let's move to female reproductive system. हमने पढ़ लिया भाई मेल reproductive system, ठीक है. पार्ट्स में बता देती हूँ. फिर होता है टेस्टिस, फिर होता है वास डिफरेंस और स्पर्म डक्ट, फिर आता है एक्सेसरी ग्लैंड, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आता है और सेमिनल वेसिकल आता है. उसके बाद आता है यूरेथ्रा, उसके बाद आता है पेनिस, उसके बाद आता है यूरेथ्रा, है ना. ठीक है, हो गया. थैंक यू गाइस, वी आर डन. गुड गुड गुड, ठीक है. और इसके थोड़ा फंक्शंस भी है जो याद रखने पड़ते हैं यार, पता नहीं, बट या वो भी हम कर लेंगे. बट फॉर दिस बेसिक दिस मच इज. Now female reproductive system, a pair of ovaries, दो ovaries होती है, इस a pair of oviducts which is also called as fallopian tube to convey the eggs, raised from the eggs, a sac like or a pear-shaped uterus for the growth and the development of the embryo developed from the egg, a vagina and vulva, the outermost part. The two ovaries are small ovid bodies. Their peripheral parts are ova or the eggs. Normally only one egg matures in each ovary. Every alternative month, a maturing egg contained in a cellular sac is called as a follicle. A maturing egg contained in a cellular sac is called as follicle. As the egg grows larger, the follicle also enlarges and gets filled with a fluid and is now called as Graafian follicle. When the ripe, the follicle bulges out from the over the surface of the ovary. Oogenesis is the process in which the ova producing cells give the rise to the mature ovum. Ovulation is the process of rupture of Graafian follicle, releasing the egg. The released egg is picked up by fibrils of oviductal funnel of the oviduct. The remnant of the follicle persists for some time to convert into a yellow mass called corpus luteum. It secretes two, that is, progesterone and progesterone. That's all.
ठीक है. नेक्स्ट बढ़ते हैं ओविडक्ट्स. द टू ओविडक्ट्स also called as fallopian tubes are about 12 cm long near the corresponding ovary. Each oviduct has a funnel shaped opening called the oviductal funnel. Cilia lining the funnel help to pick up and push the released ovum into the oviduct. Subsequently, the waves of the muscular construction or peripheral of the wall of oviduct push the egg down into the uterus. Uterus is a hollow pear-shaped muscular organ situated in the pelvic cavity between the urinary bladder and the rectum. It has two regions, an upper wider portion which receives the two oviducts and a smaller lower constricted part, the cervix or the neck. The vagina is a smaller tube or starting from the lower end of the uterus to the outside. The vagina receives the male penis during the copulation. This great elasticity of the wall allows the passage of the baby during childbirth. The opening of vagina in young female is particularly closed by this thin membrane called as hymen or virgin knot. The hymen is frequently ruptured in childhood due to strenuous physical activities or any disease. So vulva, the external female genital is called as vulva. It contains two independent opening of urethra. Vagina. The sides of vulva have two small fleshy folds, labia minora, lesser lips, which are hidden by a large hairy follicles. The labia majora, greater lips. These folds are equivalent to the male scrotum. Then these folds are equivalent to the male scrotum. In the upper angle of the vulva, in front of the urethral opening, is located a small erectile clitoris which is highly sensitive and is equivalent to male penis. The ovaries of young girls start functioning around the age of 10 to 14 years. It starts releasing the ova, and this stage in her life is called as puberty. At about the same time as the first ovulation, the ovary also releases the female sex hormone into the bloodstream. This hormone is called as progesterone, as responsible for bringing about bodily changes such as growth of mammary glands, widening of hips, growth in pubic regions and armpits, and an increase in the size of uterus and vagina. These develops are referred as secondary sexual characteristics, while another hormone secreted by corpus luteum. मैं भूल जा रही हूँ. What is corpus luteum? अच्छा ठीक है. Corpus luteum with another hormone secreted by corpus luteum, progesterone, prepares the uterus for receiving the embryo. हाँ. Invoice puberty takes place around the age of 11 to 15 years of age. The testes start producing testosterone, resulting in the development of secondary sexual characteristics like deepening of voice, growth, penis, growth of hair or the chest, armpits, pubic regions, armpits, chin, upper mustache, everything, all this. ठीक है. यहाँ पे in female there are main important diseases. what पहला है ovaries, oviducts or fallopian tubes, and then we have uterus, and then we have vagina, and then we have vulva. This is the फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ये. अब पता क्या होता है यहाँ पे ना, इतना ज़्यादा ये है यार. ट्रस्ट मी, हमारी जो टीचर है स्कूल में की, वी जेन्युइनली, आई यूज से दिस, बट वी हैड अ वेरी गुड टीचर and the one who used to teach us biology, but just 2 months ago or something, I don't remember, but she is not with us no more. Trust me, she used to teach so good, guys. Like, I can't explain how nicely she could teach everything to us. She was our biology teacher, and the ma'am didn't taught us, like, she didn't teach us this chapter and that endocrine chapter and the other one. She taught us I also half, and then exam चल रहे थे हमारे half yearly के, and then she was like, it was some serious, and then ऐसा हुआ यार. And now we have a new teacher. मैं कसम से बता रही हूँ, डीके मैंने टीचर और ऐसा कुछ कि वो मैम अच्छी थी और मैम अच्छी नहीं है, बट कसम से बता रही हूँ. आई जस्ट वांटेड टू नो दैट आपके स्कूल में भी लिटरली मैम लिटरली स्किप मार देती है चैप्टर. मैम स्किप्स ओनली दिस रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर. पता नहीं ऐसे व्हाई सम टीचर्स थिंक. दो अगर वो हमारी जो मैम थी वो अगर होती तो शी वुड नेवर डू दैट. But still, guys, it is something. It's not something we are learning out of our body, out of our knowledge, because everyone knows about this. पता है छोटे छोटे बच्चे 6 साल के बच्चे, ऐसा नहीं है कि किसी पता ही नहीं है, इतने पागल है. स्पेशली आईसीएसई के बच्चे इतने शैतान, इतने चंड चलाक. तो आई एम नॉट कॉलिंग माई सेल्फ चंड चलाक, बट आई एम सेइंग दैट पीपल रियली थिंक दैट दिस जनरेशन इज सो इनोसेंट. नो, मैंने देखे है भाई, इतने गंदे गंदे बच्चे देखे हैं मैंने. So I don't think that skipping this chapter है कुछ नहीं होता, सिखा दो कुछ नहीं होता. क्या नाटक करेंगे बच्चे, 2 थापड़ लगाओ, ज़्यादा कर रहे तो आऊँ. बिकॉज हमारे क्लास में ऐसे ही होता था. मतलब we had our teacher, ठीक है, एक थी हमारी एक मैम. सो ज़्यादा नाटक आए तो सबको बुलाओ, निकालो एक थाप 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 थाप. दैट्स ऑल. दैट वाज सो गुड. मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए यार, बिकॉज यू आर नॉट लर्निंग समथिंग आउट ऑफ योर दिस, एंड it is important. It is your syllabus, it is your this, and
ऐसा कोई ऐसा why people make it such a big issue, भाई पागल है लोग. Never mind guys, बात करें back to studying. थोड़ा बहुत मतलब अच्छा लगता है जब when we talk, when we study, when we study. We don't understand we are studying or we are talking. सोच रहे मेरे को मतलब पढ़ना तो सभी नहीं पसंद है, but getting back. Now let us study about menstrual cycle. Okay, the reproductive period of human female continues from the age about 13 years to 40 to 45 years. ठीक है, मेनार्क होता है जो ऑनसेट होता है, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, और मेनोफेज होता है जो पीरियड्स बंद हो जाते हैं. ठीक है, दैट इज, ये तो पता ही होगा यार, नहीं पता होगा तो प्लीज पढ़ लेना टेक्स्ट बुक निकाल के. ठीक है, नाउ इन मेंस्ट्रुअल साइकिल वहाँ पे 4 फेजेस होते हैं. पहले एक मेंस्ट्रुअल फेज होता है, ठीक है, जो कि 4 से 5 दिन का होता है. ठीक है, विल डिटेल में पढ़ेंगे पहले. हाँ, पहले होता है मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड देन ल्यूटियल फेज. ठीक है, ये होते हैं हमारे 4 फेजेस. पहले मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, ये 3 से 5 दिन होता है, during which blood is discharged. The bleeding is caused due to the shedding and rupturing of the blood vessels that make up the thickened innermost lining of the uterus called the endometrium. Starting from the onset of the menstruation flow, the ovary begins to form a new egg in a follicle. Follicular phase, it continues from days 5 to 12. As the follicle grows, the amount of progesterone production by the ovary increases. This hormone then acts on the uterus and causes its lining to become thinner and develop. क्या पढ़ रही हूँ, मुझे पढ़े जा रही हूँ, मुझे याद भी नहीं हो रहा कुछ. ठीक है, हाँ, तो फॉलिकुलर फेज जो है ये 5 से 12 दिन होता है. एज अ फॉलिकुलर फेज ग्रोज, द अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज इंक्रीजेस. This hormone then acts on the uterus and causes its inner lining become thicker and develop more blood vessels. This change in a kind of preparation of uterus to receive the fertilized egg and assist in the earlier implantation of an embryo is subsequent development. Ovulatory phase, on about 13 to 14 day, the follicle ruptures, ovulation, and the released egg travels into the oviducts. The two hormones produce pituitary, FSH, follicle stimulating hormone, and LH, luteating hormone, promote the maturation and release of ovum. It lasts for 15 to 28 days. Uterine lining becomes thickens further, and after the release of ovum, the entire follicle in the ovary turns into a hormone producing tissue called corpus luteum. ठीक है, if the ovum is fertilized, the corpus luteum continues to release progesterone and so keeps the uterus in a state of stable, suitable for implantation. However, if on the other hand there is no fertilization, the ovum disintegrates and the corpus luteum stops producing progesterone. As a result, the thickened lining of the uterus endometrium restarts shedding on the 28th day and loses blood, which escapes through the cervix and vagina. Fertilization, union of eggs, nucleus and sperm nucleus during copulation, mating or coitus. The sperms are released into the vagina near the cervix of the uterus. A single ejaculation by the human male contains about 400 million sperms. These sperms actually swim with the help of their tails and pass through the cervix into the cavity of the uterus, progressing at the rate of approximately 1.5 mm per minute from the uterus. They climb up to reach the oviducts. If there happens to be an ovum egg in the oviducts, it gets fertilized by just one single sperm. The fusion of male and female gametes to form a zygote is called fertilization. A few days soon after ovulation, 12 to 13 days after the onset of the menstruation, and are most favorable for the conception, becoming pregnant. Out of the millions of sperms released into the vagina, very few are able to climb up to the upper parts of the oviducts. The rest die on the way and are absorbed. The acrosome at the top of the head of the sperm secretes an enzyme hyaluronidase, which facilitates the entry of sperms into the egg by dissolving the wall of the ovum. The nucleus contains genetic material 22 plus X or 22 plus Y, whatever type, girl or boy, depends on that. So, which during the fertilization combines with the nucleus of the egg contains 22 plus X chromosome and restoring the normal 23. The mitochondria contained in the middle provides ATP energy for activity of the sperm to swim. The tail makes lashing movements for the population. Sperms may remain alive in female genital passage for a few days, but their fertilizing power is limited for 2 to 3 days only. During fertilization, several sperms may surround an egg, but only one enters it. In doing, the tail is left behind, and only the head part, which contains nucleus, penetrates the egg. This sperm nucleus fuses with the nucleus of the egg. As soon as one sperm enters the egg worm, the entry of other sperms is prevented by a chemical barrier. The fertilized zygote soon start dividing leaves into 2, 4 into even numbers, and so on by the small hollow ball of numerous
cell called a blastocyte. This is a kind of embryo which forms a pit in the endometrial lining of the uterus and gets fixed in it about 5 to 7 days time after ovulation. This process is called as implantation and is a state of pregnancy. Implantation, the process of fixing of the blastocyte to the wall of the uterus endometrium is termed as implantation. The uterus continues to develop to take care of the developing embryo. By the end of the 5 weeks of the pregnancy, the embryo is quite advanced. The heart and the circulatory system have been formed. After 2 months, limbs have been formed. Embryo a growing egg after fertilization until the main parts of the body and the internal organs have started to take shape. Fetus, when embryo starts having a look of a baby from 7 weeks to gestation and onwards. Pregnancy, the state of carrying the unborn young one inside the body, that is pregnancy. Amniotic and amniotic fluid. In the early stages of gestation, the implanted blastocyte mass of cells develops a number of extra embryonic membrane to protect the developing embryo and provide it with nutrition as it develops. These membrane are amniotic, chlorine, allantonosis and placenta. They play a vital role in development of fetus and are present right up to the time of the birth. Amnion is a sac which develops around the embryo even before the formation of the allonosis. A fluid, amniotic fluid, fills the spaces between the amnion and the embryo. Functions of amniotic fluid: protects the embryo from physical damage by jerks or mechanical shocks. For example, when the mother falls over, keeps and even pressure all around the embryo, allows the fetus some restricted movement, prevents sticking to the fetus to the amnion. Placenta, the growing embryo or the fetus 8 weeks old with human-like appearance, is living organism. It needs food, oxygen, excrete nitrogenous waste, carbon dioxide, which need to be continuously removed. These special functions are performed by a structure called as placenta. मुझे placenta पता कब पता चला? मुझे पता नहीं था कि बॉडी के अंदर placenta नाम की, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर एक placenta नाम की चीज़ होती है. मैंने यशोदा नाम की मूवी देखी थी. As I told, I am बिग मूवी पगलू. तो यशोदा नाम की मूवी है. Again it is of Samantha guys. तो उसका वाला, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि वो प्लेसेंटा निकाल के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं. स्ट्रेंज. तो वहाँ से मुझे पता चला. देन आई वाज लाइक, अच्छा ऐसा ही होता है. मुझे नहीं पता है कितना सच है कितना झूठ है, बट इट वॉज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी एट द एंड दे टोल्ड. आई रिकमेंड गाइज, प्लीज गो एंड वॉच यशोदा इफ यू हैवंट. अच्छी है मूवी, लाइक गुड. इट्स अबाउट हाउ, अच्छा यार, गुड यार, मतलब नॉट दैट दिस बट रियली इट वॉज अ मैसेज गिविंग, एंड मैसेज गिविंग मूवीज मुझे बहुत अच्छी लगती है. Let's a cord containing blood vessels connects the placenta with the fetus. This is called umbilical cord. The placenta is formed of 2 sets of minute finger-like projections. The villi, one set of the villi are given out by the uterine wall and the other set by an extension allantosis, but they never open into each other. Here the blood of the embryo comes in contact but never mingles with the blood of the mother. The fertile embryo's permeability of the placenta. The placenta is permeable to respiratory gases, nutrients and other also wait one second, and also from the mother to the fetus. At certain diseases like HIV, AIDS can pass through the placenta if the mother is already infected. Secondly, if there was a direct continuous blood dip between the mother and the fetus without a placenta, the relatively high pressure of the mother would be seriously damage the soft and delicate tissues of fetus. Blood brought to it by an artery contain blood dioxide and urea excreted by the fetus. This blood flows through very fine capillaries of the placenta. Close to these are capillaries and blood sinuses of the mother. Placenta is the intimate connection established between the fetal membranes and the uterine wall, permitting diffusion of nourishment from the mother's blood to that of the growing fetus and disposal of waste from the blood of the fetus to that of the mother. Placenta also acts as an endocrine gland. It produces the hormone called as ostestrone and progesterone. Presence of progesterone in the urine provides for certain tests of pregnancy. प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है तो उससे पता चलता है कि हाँ प्रेग्नेंट है. पता है ना प्रेग्नेंट ये होता है एड्स में, तो वो ऐसे उसमें अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज प्रेजेंट इट विल चेंज द कलर, 2 लाइन 3 लाइन ऐसा. ठीक है. पार्ट न्यूट्रिशन मतलब बर्थ होता है. पार्ट न्यूट्रिशन के से बर्थ. A full term of the development of the embryo in the uterus is called gestation. In humans, it lasts for about 280 days. At the time of the birth, the baby is pushed out by the powerful contraction of the nucleus
muscles of the uterus head first. In a few minutes, the blood vessels in the umbilical cord shrink and can be tied and cut. After about 15 minutes, the placenta breaks from the uterus and is expelled out. After the birth, uterus contracts and gradually comes back to the normal in few days. Okay, uterus concern. Partnership is an act of expelling the full term fetus from the mother's uterus at the end. Gestation. Newborn announces its arrival by letting out a sharp cry. The cry is the nature's clearing process of baby's respiratory passage. अब होते हैं दो टाइप के ट्विंस, ठीक है. आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, फेटर्नल ट्विंस होते हैं. जो फेटर्नल ट्विंस होते हैं यहाँ पे दो एग्स रिलीज होते ही दो एग्स होते हैं फ्रॉम द ओवरी से. तो होते वक्त ही दो ओवरी होते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है. आइडेंटिकल होता है जो होते हैं एक ही एग ही होता है, उसको वही फर्टिलाइजेशन होता है और वही टूट के दो बन जाता है, वो होता है आइडेंटिकल, ठीक है. जो दिखने में सुनने में दिखने में तो सब सेम होते हैं. होते वक्त जो आइडेंटिकल है कि दोनों लड़की और लड़की हो गई या फिर दोनों लड़का लड़का होगा. बट यहाँ पे क्या होता है फेटर्नल में एक दोनों लड़की लड़का हो सकता है, लड़की लड़का हो सकता है, लड़का लड़की हो सकता है, लड़की लड़की हो सकता है, लड़का लड़का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इन fraternal. This is what it is. And again, sometimes there are 4 or even more babies are born from a single pregnancy. Such births may arise due to variety of conditions. For example, triplets 3 born at may be produced either from one single zygote splitting into 2 or one of the parts again splitting into 2, or the triplets may be produced from 2 eggs in which one zygote produces a pair of identical twins and the other develops normally into one. Maybe quadruplets 4 born at a time may be produced as 2 pairs of identical twins from 2 eggs or in their combination of identical and fraternal twins. The chances of survival of all the children in multiple birth decreases with increase in the number. Rare cases of 6 or 7 babies produced are known, but only a few numbers survive. बेटर मैं क्या एक ही बच्चा करूँ जो हेल्दी है, 2 4 5 6 7 7 करेंगे और ठीक है तो एक भी ना वही है. So yes guys, that is it. Here we are done with the chapter and हमने ऑलमोस्ट 50 मिनट में 2 चैप्टर कर लिया मैंने. यार ये वाला भी चैप्टर कर लिया. वैसे तो मेरा था कि मैं सिर्फ एंडोक्राइन और रिप्रोडक्शन करूँ, पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है 2 बार अभी भी ऐसा है कि नहीं पढ़ना तो बिल्कुल मन किसी का ही करता है. किसका करता है पढ़ने का मन गाइस? मेरा तो नहीं करता. बट आई एम थिंकिंग कि मैं सेंस ऑर्गन्स जो है ना ये भी पढ़ ही लेती हूँ, बिकॉज व्हाई नॉट. So let's read the sense organs also. ठीक है. इसके बाद तो और 3 चैप्टर्स है, उस 3 चैप्टर को भी करना होगा यार. Orbits. The 2 eyes are located in the deep sockets or orbits on front of the head. Each eye in the form of a ball and can be rotated with the help of a six muscles. Eyelids. The upper movable and the lower eyelids protect the outer front surface of the eyes and can shut out light. Each eyelid carries outwardly curved eyelashes which prevent falling of larger particles into the eyebrow. Although virtually are not a part of eye, these are also protective. They prevent the eye raindrops or the trickling perspiration from getting into the eyes. Tear glands. They are located at the upper sideward portion of the orbit. 6 to 12 ducts of the gland pour into the secretion over the front surface. The movement of the eyelids blinking spread the liquid which mainly serves as a lubricant. The tears also keep the front surface of the eye clean by washing away dust particles. They also have an antiseptic property due to the enzymes lysosomes which kill the germs. Tear ducts. These ducts drain off the liquid into a sac lining in the inner cycle of the eye or nasolateral duct conducts the secretion into the nasal cavity. All of us have sometimes experienced that medicine drop into eyes, come into nose, and even into throat. This happens through the above mentioned duct due to the irritation or in the certain emotional state. The tear glands pour into our liquid water. The eyes is overflows as tears. You may shed both in grief and extreme joy. So functions of tears: lubricate into the surface of the eye, wash away the dust particles, help in killing the germs, communicate the emotions. Conjunctiva. It is a thin membrane covering the entire front part of the eye. It is continuous with the inner lining of the eyelids. Over the cornea, it is reduced to a single layer of the transparent epithelium. You must have often heard of a very common eye disease, conjunctivitis, in which these outermost layer turn red due to a viral infection. This bony orbit, socket, eyebrows, tear glands, and conjunctiva serve for eye protection in their own ways.
structure of an eyeball. The wall of the eyeball is composed of three concentric layers: the outer sclerotic, middle choroid and inner retina. Sclerotic होता है, ठीक है. स्क्लेरेटा भाई याद रख ले, भूल जाती मैं सब कुछ. Sclereta is made up of a tough fibrous tissue and is white in color. The white portion on front of the eye is sclerotic layer. It's itself visible through the conjunctiva. It bulges out and becomes transparent in the front region where it covers the colored part of the eye. This part is called as cornea. Sometimes the cornea of some patients turns opaque, white and non-functional. In such cases, the defective cornea can be replaced by a healthy cornea from a donated eye. Cornea remains alive up to nearly 40 hours after the death of a person. If donated, the eye can be removed soon within about 4 hours after death. It is restored in an eye bank at a very low temperature in a suitable medium such as blood plasma or even certain other sterile germ-free liquid medium for grafting. The cornea part is taken out from the eye and is fixed in place of a defective cornea and the vision is restored. According to recent report, AIMS New Delhi has developed the technique of silicating the cornea into 2 to 3 layers as can be graphied on as many defective eyes. The choroid layer is richly supplied with blood vessels for supporting nourishment to the eye. It contains a dark black pigment melanin which prevents light rays from reflecting and scattering inside the eye. In front of eye, the choroid expands to form the ciliary body. Contains cellular muscles. The smooth muscles in ciliary body after alter the shape of the lens. The iris Latin rainbow is also an extension of choroid, particularly covering the lens and leaving a circular opening to the center. The pupil, the blue, brown or black color of the eye refers to the color of the iris. Pupil name or has been derived from the Latin word pupa meaning doll, which in with this context refers to the tiny image of the onset seen reflected in another's eye. The iris contains radical muscles to widen and circular muscles to constrict the pupil. This adjustment of the size of the pupil regulates the amount of light entering the eye. You can easily observe this by throwing a torch light into the eyes while looking into a mirror. In dim or dark the light, the pupil is dilated, while in bright light it constricts. The pattern and the arrangement of iris muscles is unique for every individual and therefore there are also a source of an individual's identification. The retina or innermost layer is sensitive to light. It contains 2 types of cells called rods and cones. The rods, the inner cells, inner ends rod-like, are sensitive to dim light but do not respond to color. They contain the pigment rhodopsin or the visual purple. The rod cells contain rhodopsin or the visual purple. The cones, inner conical, are sensitive to bright light and corresponding for the color, which are iodopsin or visual violet. The cone cells are most confined to the yellow spot. Yellow spot, the area of the best vision. The distribution of rods and cones is not uniform. A particular spot called the macula luteum or simply yellow spot lies at the back of the eye, almost at the center on the horizontal axis of the eyeball. This spot contains the maximum number of sensory cells and particularly the cones. As a result, this is the region of brightest vision and also of the color vision. The rest of the retina has fewer cones and more rods. Yellow spot is a place of the best vision of the normal eye. This is the reason why you move your eyes from word to word as you read a line through a particular page. Blind spot, the area of no vision. Lateral to the yellow spot on the nasal side is blind spot. There are no sensory cells here and therefore this is a point of no vision. This is a point at which the nerve fibers from all the sensory cells of the retina converge and bundle together to leave the eyeball in the form of an optic nerve. Lenses. The lens is a transparent, flexible, biconvex crystalline body located just behind the pupil. It contains transparent lens fibers, long, thin cells which have lost their nuclei. The lens is collectively held in the position by fibers called the suspensory ligament, which attaches it to the ciliary body. The ciliary body lies at the junction of the choroid and the iris and is itself a part of choroid. The ciliary body contains muscles which, on contraction and relaxation, change the shape of the lenses, somewhat being elastic for viewing objects at different distances. 2 chambers of the eye, aqueous and vitreous chamber. Aqueous chamber and vitreous chamber. The lens, together with its suspending structure, divides the inner cavity of the eyeball into 2 chambers. Aqueous chamber in front of the lens and the vitreous chamber behind the lens. Aqueous chamber in front of the chamber between the lens and the cornea. It is filled with a clear watery liquid. Aqueous chamber. The aqueous humor serves in 2 ways: keeps the lens moist and protects it from physical shock. It refracts light. Vitreous